Afternoon, all of you. Welcome to on today's webinar. The topic of our today's webinar is the Java with the framework. And welcome to our today's webinar speaker, Shefali Patel, ma'am. Ma'am is a senior technical trainer in the TOPS Technologies Ahmedabad. So, without the further ado, we are starting with our today's webinar. Welcome, ma'am. Thank you so much. Okay, so we're going to cover the Java, the definition, the usage, the feature, and what is its application platform, and then we'll cover what framework, that is MVC framework, okay, and Spring and Hibernate overview. So before starting that, let's first discuss what is Java. So Java is one of your programming language who supports the platform independent feature. Platform independent means जो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप उसका सेम आउटपुट वो विजिबल कर सकता है, प्लस इट्स ओपन सोर्स यानी कि इट्स फ्रीली अवेलेबल, so you don't need to pay anything to buy the Java software. Basically it's a part of the Oracle now. So Java is following one of the principle that you can write the Java program on the first time and you can run on the any operating system. So Java basically supports the three platform, मतलब कि Java से आप कितने कैसी एप्लीकेशन बना सकते हो. So your first platform is the J2SE, जो अभी हम थोड़ा उसका ओवरव्यू देखेंगे, that is Java to Standard Enterprise, जिससे आप एक कोर एप्लीकेशन बना सकते हो जो कोर जावा की लाइब्रेरी से सपोर्ट होता है with the GUI support of Java FX or the Swing framework. Then second is a J2EE platform, which is Java to एंटरप्राइज एडिशन जो हमने बात की थी, जावा आर्किटेक्चर की भी वो सपोर्ट करता है. तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन यानी कि वो एक एडवांस जावा के कंसेप्ट से बन सकता है, दैट इज डन बाय यूजिंग द जेएसपी एंड सर्वलेट. उसका भी हम एक प्रोग्राम सीखेंगे. एंड योर थर्ड प्लेटफॉर्म इज योर J2ME, जावा टू मोबाइल एडिशन, जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, बट नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ कोटलिन ऑल्सो एंड यू कैन डेवलप बाय यूजिंग द रिएक्ट नेटिव ऑल्सो. सो बेसिकली ये तीन एप्लीकेशंस में जावा ऑल ओवर चलता है. So feature की बात करें, so why Java is a simple, because once you are aware of the C and C++, you can easily switch to the Java programming language, because वो C and C++ में जो C++ है, which is object oriented, right? So Java is also supporting your object oriented feature, but Java is not प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट. जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट को सपोर्ट करता है, बट जावा इज नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. जो एक कोर जावा का कंसेप्ट है, दैट इज योर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड योर स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक मॉडिफायर इज दैट, राइट. वो लॉजिक है उसके पीछे. देन जावा इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इंटरप्रेटेड, राइट, वन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है. एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट जावा में आता है, जो जावा को पावरफुल और रोबस्ट बनाता है. यानी इट्स मीन दैट यू कैन अचीव योर नॉर्मल एग्जीक्यूशन, राइट. जो रन टाइम में, आई होप यू आर अवेयर ऑफ इट, कि जो रन टाइम में जो आपका जो प्रोग्राम्स होता है, अगर वो फेल होता है रन टाइम में, एक्सेप्शन आपकी कैप्चर होती है, तो उसको हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट होता है. Then security, why Java is almost used on the 360 degree of your industry. So the basic reason for that is the Java is a secure programming languages. Security terms इसमें इस तरीके से होता है कि इसमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क है जो आपकी सिक्योरिटी के लाइब्रेरीज को सपोर्ट करता है, प्लस जावा का जो प्रोग्राम होता है वो एक बार आप कंपाइल करते हो तो उसकी क्लास फाइल जनरेट होती है. वो जो क्लास फाइल होती है वो बाइट कोड को कंटेन करती है, उसकी वजह से जावा जो है वो बाय डिफॉल्ट बाय द यूज ऑफ JVM वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपको. It's a portable, it's a high performance, it can support the multitasking at a time, जो multi-threading का concept होता है, plus Java is a dynamic programming languages. So this is one of the advantages कि किस तरीके से Java use होता है. उसकी प्रोग्रामिंग की बात करें या तो फिर किस तरीके से जावा उसके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, सो दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ JVM, JDK एंड द JRE. सो JVM इज अ जावा वर्चुअल मशीन, जो अभी हमने डिस्कस किया कि आपकी क्लास फाइल जब एक बार बनती है, सो क्लास फाइल आपकी कब बनती है, जब आपका प्रोग्राम कंपाइल फ्री होता है, जब आपका प्रोग्राम एरर फ्री होता है, राइट. जब प्रोग्राम कंपाइल होता है देन एंड देन द क्लास फाइल विल बी मेड. सो एक बार जब आपकी क्लास फाइल बनती है ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो JVM क्या करता है, आपके जो कोड होता है आपकी क्लास फाइल का, उसको ऑटोमेटिकली वो बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है. दैट इज वन ऑफ योर मशीन लैंग्वेजेस कोड, right? So bytecode is nothing but your intermediate language between the Java source and the host system. So that's why Java is called a platform independent, just because of the Java virtual machine. So that is a concept of your JVM. Java अगर आपको स्टार्ट करना है मशीन में, तो you need to install the JDK first. So after installing the JDK, it will provide you the tools and the library that is required to run your Java application. So it is nothing but the collection of all your programming tools.
right? So currently we are using the Java AC8, but market you can easily find out the Java AC15 is currently the latest version of the Java. So the third concept is the JRE. JRE is also known as the Java Runtime Environment. This is also part of the JDK. मतलब कि जब आप JDK install करते हो, then the JRE will be there. जो basically it is a responsible for the multiple computer programs, right? जो contain करता है आपकी classes को, component को, जो basic thing है आपके program को run करने के लिए जो software की need होती है, that is your JRE library. सो आप जावा में आईडी यानी कि कौन सा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट का यूज कर सकते हो, तो इक्लिप्स इज वन ऑफ द फेमस प्रोडक्ट फॉर दी जावा. अदरवाइज यू कैन यूज द सबलाइन, विजुअल स्टूडियो भी आप यूज कर सकते हो. नोटपैड इज अ बेसिक पार्ट. नेटबीन्स ऑल्सो यू कैन यूज, बट दी वन ऑफ दी जो अभी नीडेड है इंडस्ट्री को, वो इक्लिप्स या तो फिर आप इंटेलाइजर का यूज कर सकते हो. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट अवर फर्स्ट प्रोग्राम. सो यहाँ पे मैंने इक्लिप्स टूल का यूज किया हुआ है. सो किस तरीके से इसमें आपको प्रोजेक्ट आप बना सकते हो. सो फाइल न्यू, पहले हम कोर एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं, देन विल मूव टू दी वन फ्रेमवर्क. सो अगर मुझे सिर्फ कोर एप्लीकेशन बनानी है, देन आई विल सिंपली राइट क्लिक ऑन दी फाइल न्यू एंड प्रोजेक्ट, एंड देन आई विल मेक दी जावा प्रोजेक्ट and give a meaningful name of your project. Let's start the core Java webinar and finish it. So Eclipse by default इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट बनेगा. SRC is containing all your root elements. So right click on SRC, new and class. By this you can make your class. Best practice ये कहलाती है कि we need to first make the package structure and then we'll start our first program. This is the way we can make the class file. So जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को सपोर्ट करती है. सो मेन फाइल बनाने के लिए जावा में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट सपोर्ट होता है. And for the coding container, we are using the constructor or the method, depends. So constructor जो है वो आपके same as the class name बनता है, right? User input अगर आपको लेना है, then you need to make the scanner property, जिससे आप user से inputs ले सकते हो. Then new scanner, the system dot in. different data types के input को लेने के लिए we are using the SOP for maintaining the lines. Let's say I'm taking first integer, then I'm taking for next the string. So basically Java जो है वो सपोर्ट करता है और स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, जिसका मतलब होता है कि यू नीड टू डिफाइन द डेटा टाइप्स. इसका अगर मैं ऑपोजिट एग्जांपल दूं, लेट्स से पाइथन. सो पाइथन जो है वो आपकी डायनेमिक डेटा टाइप को सपोर्ट करता है. डायनेमिक लैंग्वेजेस है, उसका मतलब है कि यू डोंट नीड टू डिफाइन द डेटा टाइप्स एंड ऑल टू फेच द वेरिएबल. बट जावा है, सी एंड सी प्लस प्लस है, .NET है, उसमें आपको डेटा टाइप्स डिफाइन करना पड़ता है. मतलब इट्स कॉल्ड अ स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट? फर्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे यही है कि अगर मुझे इंटीजर की वैल्यू यूजर से लेनी है, देन बाय यूजिंग द स्कैनर वेरिएबल आई नीड टू कॉल द नेक्स्ट int कीवर्ड. So next int is your result keyword, who is responsible to take the integer value from the user. Same way for the string, we are using the next keyword. There is a lot of difference between the next and the next line that you need to search out कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होता है. वो बहुत ही मतलब ब्रॉड कंसेप्ट है एक. एंड फॉर द fetch we are using the plus sign for the Java. This is the basic infrastructure of the Java, basic code skill of the Java. And how to call this constructor? So it's a C++ theory we are just following over here. कि जो भी आपका कंस्ट्रक्टर होता है, जो भी क्लास की प्रॉपर्टी होती है, वो आपकी ऑब्जेक्ट थ्रू कॉल होती है. सो ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द इंस्टेंस ऑफ द क्लास. सो वट एवर अ क्लास नेम दैट शुड बी मैच विथ योर ऑब्जेक्ट नेम. एंड is equals to new. बेसिकली ये जो न्यू ऑपरेटर है, उसी से आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ऑन द रन टाइम.
सेमीकोलन। कंस्ट्रक्टर की थियरी में पता है एज सी प्लस प्लस की वो ऑब्जेक्ट के साथ ही इन्वोक होता है, बट इन द केस ऑफ द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ओनली. So whenever we are going to run it, right, first we'll enter the integer, then we'll enter the string, and then you will get your output. This is the basic core skill of the Java. Then if we are talking about the OOPS concept, object oriented programming, then the class is there, object is there, polymorphism, inheritance, encapsulations, and abstraction is there. So before starting the MVC, let's first I'm going sharing you one example of encapsulation. Encapsulation का आप किस तरीके से यूज कर सकते हो उसका हम डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं. So encapsulation is nothing but your data hiding concept, जो आपकी properties जो होता है उसको hide करता है to change it from the outside world reference. तो उसका प्रोग्राम किस तरीके से कर सकते हो, बिकॉज ये सबसे मेन पार्ट होता है फ्रेमवर्क्स के अंदर. जो MVC फ्रेमवर्क्स हम कवर करने जा रहे हैं, जो स्प्रिंग एंड हाइबरनेट हर एक जगह पे जब बेसिक थिंग यूज होता है उसमें M स्टैंड्स फॉर द मॉडल. तो आपकी जो मॉडल की क्लास होती है इट्स नथिंग बट योर एनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टीज. तो उसका मैं आपको पहले एग्जांपल देती हूँ. योर एनकैप्सुलेशन क्लास जो होगा वो सबसे पहले डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज हमें जो डेटाबेस में ऐड करवानी है. वो सारी प्रॉपर्टीज बेसिकली हमें यहाँ पे डिफाइन करनी होती है विद द यूज ऑफ प्राइवेट मॉडिफायर, बिकॉज हमें पता है कि प्राइवेट मॉडिफायर ही ऐसा मॉडिफायर है जो आपकी प्रॉपर्टीज को दूसरे क्लास में चेंज होने से प्रिवेंट करता है. So you cannot access your variable to the outside of the class by using the private modifier. So we are declaring our property with the private modifier like this. Username and let's say password. Let's say कि मेरी ये 3 रिक्वायरमेंट है जिसको मुझे डेटाबेस में स्टोर करना है, राइट. सो मुझे उसको पहले यहाँ इनकैप्सुलेशन में एज अ प्रॉपर्टी डिफाइन करना पड़ता है. अभी हमें पता है कि हमने प्राइवेट डिफाइन किया है तो हम उसकी वैल्यू दूसरे क्लास के अंदर चेंज नहीं कर पाएंगे. लेकिन जब सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट होती है, राइट, जो हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम बनाते हैं, तो उसमें ऐसा भी नहीं होगा कि हम एक ही क्लास के अंदर पूरा कोड करेंगे. सो वी नीड टू कंसेप्ट इज कि हमें दूसरे क्लास बनाने पड़ेंगे जिसमें हमें ये क्लास की प्रॉपर्टीज का भी यूज करना पड़ेगा, बट हमने यहाँ पे प्राइवेट उसको डिफाइन किया है. तो वो कंसेप्ट फिर हम कैसे अचीव करेंगे. सो एनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि आप जब प्राइवेट मॉडिफायर यूज करते हो प्रॉपर्टीज के लिए, तो उसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए या उसकी वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा गेटर एंड सेटर का कंसेप्ट. सो व्हाट वी नीड टू डू इज सोर्स एंड जनरेट दी गेटर सेटर्स. जस्ट अ सेकंड. So right click, generate getter setter, select all the checkbox and OK. So यहाँ पे ऑटोमेटिकली हर एक प्रॉपर्टी की इंडिविजुअल सेटर एंड गेटर प्रॉपर्टी बनेगी जो पब्लिक मॉडिफायर से बनेगी. सो बेसिकली जब मुझे आईडी प्रॉपर्टी जो है उसमें वैल्यू जब स्टोर करनी होगी, देन आई विल कॉल दी सेटर प्रॉपर्टी, एंड व्हेन वी वांट टू रिट्राइव इट्स प्रॉपर्टी देन आई विल यूज दी गेटर प्रॉपर्टी. वो किस तरीके से होगा. सो यहाँ इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ हमें प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, और जब इसकी प्रॉपर्टीज पे वैल्यू सेट करनी होगी देन फॉर दैट वी नीड टू मेक द डिफरेंट क्लास. सो आई एम गोइंग टू मेक द डिफरेंट क्लास जिसमें हमें प्रेजेंटेशन लॉजिक और बिजनेस लॉजिक को सेपरेट कर देना पड़ता है. ये क्लास क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे एनकैप्सुलेशन के क्लास को कॉल करेगा. इसमें उसी तरीके का नेम इसको देती हूँ. मेक फर्स्ट मेन मेथड एंड देन जो हमारी सेटर एंड गेटर प्रॉपर्टी वाला जो क्लास था उस क्लास का ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे बनाना है. देन फर्स्ट आई नीड टू प्रोवाइड द वैल्यू. सो अभी हमने डिस्कस किया कि वैल्यू प्रोवाइड कैसे करोगे. सो बाय कॉलिंग इट सेटर प्रॉपर्टी. सो ई डॉट सेट आईडी, ओवर हियर आई नीड टू प्रोवाइड द आईडी. यहाँ पे आप मैन्युअली भी ले सकते हो और यहाँ पे आप GUI का यूज करके भी ले सकते हो. थर्ड थिंग, आप यहाँ पे स्कैनर का यूज करके भी ले सकते हो. इट्स अप टू अस, इट्स डिपेंड्स ऑन अवर रिक्वायरमेंट, बट सेटर का यूज करके ही आप वैल्यू प्रोवाइड कर पाओगे. देन द यूजर नेम,
we provide the username, then the password. So, providing the value जब हमें उसको रिट्राइव करना होगा. सो रिट्राइव करने के लिए पहले हम लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. देन जैसे हमने सेटर का यूज किया सेम वे आई विल बी यूजिंग द गेटर प्रॉपर्टी. सो ई डॉट get username and then e dot get password. So this is the way we can retrieve the value. ये just एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन का ओवरव्यू है. अभी मैं आपको एक फ्रेमवर्क जो दिखाऊंगी उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि उसमें हमें एग्जैक्टली डीबी के अंदर स्टोर करना होगा. तो इस तरीके से हम क्लासेस एंड वो सब नहीं बनाएंगे. ये वाला पोर्शन तो बनेगा ही राइट. लेकिन अगर लेट्स से कंसोल एप्लीकेशन से अगर आपको ये प्रोडक्ट बनानी है then this is the one of the example that you need to follow. So, run your application. Okay, and after running you will get your output. So this is the way you can provide the values in the encapsulation का. ये encapsulation का एक live example है. Okay, then we'll start one MVC framework कि मॉडल व्यू और कंट्रोलर में आप कैसे काम करोगे जिसमें हमें JSP, HTML, योर सेशन कंसेप्ट, योर सर्वलेट, उन सब चीज का यूज करके काम करना पड़ेगा. सो उसमें प्रोजेक्ट आपको किस तरीके से बनाना है. सो वी आर नॉट मेकिंग द सिंपल प्रोजेक्ट फॉर दैट. फॉर द फ्रेमवर्क वी आर मेकिंग द डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट. थीटार आर्किटेक्चर पे आप इसको बोल सकते हो विद द वर्जन ऑफ 2.5. एंड नेक्स्ट दिस इज योर डेप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है द web.xml राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है अपनी जो अपनी सर्वलेट की फाइल को कंटेन करती है. दिस web.xml एंड फिनिश इट. सो एडवांस जावा में आपको इस तरीके का फोल्डर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. दी जावा रिसोर्स एसआरसी फोल्डर, जो एसआरसी तो अभी हमने जस्ट देखा है, एंड वेब कंटेंट इज देयर. सो एडवांस जावा जो है जो J2EE आर्किटेक्चर पे अभी हम देख रहे हैं ये सब कंसेप्ट. सो J2EE आर्किटेक्चर जो बेसिकली क्या करता है कि योर प्रेजेंटेशन लॉजिक एंड योर बिजनेस लॉजिक दोनों को सेपरेट आउट कर देगा. मतलब जो वेब कंटेंट का फोल्डर ऑटोमेटिकली जो बना है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रेजेंटेशन लॉजिक को कंटेन करता है. मतलब योर डिजाइनिंग पेज लेट्स से JSP है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, वो जो फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी, फ्रंट एंड का टूल है, फ्रंट एंड का पेज है, वो सब हमें वेब कंटेंट के अंदर बनाना है. और जो भी आपका बिजनेस लॉजिक कंटेन करता है मतलब कि योर जावा पेज, तो जावा जो पेज है वो कंपलसरी SRC के अंदर बनाना होता है. सो बेसिकली हम एक यहाँ पे एक लाइव एप्लीकेशन ही कवर करता है. सो आई एम मेकिंग फर्स्ट दी JSP फाइल. ये क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है. सो JSP जो है वो सर्वलेट को रिस्पॉन्ड करेंगे और सर्वलेट जो है वो JSP को रिस्पॉन्ड करेगा. सो लेट्स फर्स्ट मेक दी होम पेज. एंड एडवांस जावा में आपको जार फाइल की नीड रहती है. सो बेसिकली वी आर यूजिंग द टॉमकैट सर्वर टू रन अवर एप्लीकेशन. तो टॉमकैट सर्वर यू नीड टू इंस्टॉल इन योर मशीन. सो मैं आपको वो चीज बताती हूँ. इनसाइड दिस सॉफ्टवेयर अपाचे टॉमकैट सर्वर का आपको यूज करना पड़ता है जो इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो. उसमें जो लाइब्रेरीज होती है उसमें सर्वलेट API करके आपको एक जार फाइल मिलेगी. तो ये जार फाइल को बेसिकली आपके वेब कंटेंट के LIB के अंदर आपको प्लेस करना होता है. सो इनिशियल लेवल की एरर इस तरीके से उसमें रिमूव करनी पड़ती है. चलो देन विल मेक वन फॉर्म्स. तो HTML में जब भी आपको फॉर्म्स बनाने होते हैं देन वी आर यूजिंग द फॉर्म टैग फॉर दैट. एंड इनसाइड ऑफ एक्शन वी नीड टू कॉल अवर सर्वलेट फाइल. लेकिन उससे पहले हम थोड़ा डिजाइनिंग यहाँ पे खत्म कर लेते हैं.
So we are making the method for that. There are two methods that our client server architecture is supporting. One is your get and second is your post. दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है कि insert, update, delete और fetch, let's say जितने भी चाहो आप क्वेरी कर लो, लेकिन जब भी आपको डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करना होता है, जब आप डेटा पास कर रहे होते हैं, देन यूज द पोस्ट मेथड, बिकॉज पोस्ट मेथड जो है वो आपके यूआरएल में डेटा आपको पास नहीं करने देती है, बट गेट मेथड इज उसका ऑपोजिट काम करती है कि वो यूआरएल में आपके डेटा को पास कर देगा. Right, so for this reason we are using the post for particular insert query, and let's make one table structure form. Inside of row, making one column, say username. Inside of username, I'm making the second TD. यहाँ पे हम एक text box का कोड लेते हैं. So how to make text box using the HTML? So input type is equals to text, और basically हमारा गोल है कि text box के अंदर मैं जो भी वैल्यू असाइन करूँ वो वैल्यू मेरी डेटाबेस में स्टोर होनी चाहिए विद द यूज ऑफ MVC फ्रेमवर्क. सो यहाँ पे उसकी वैल्यू को फैच करने के लिए आई नीड टू कॉल दी नेम प्रॉपर्टी, और यहाँ पे मैं नेम उसी तरीके का लेती हूँ जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स की डिमांड है. एंड देन सेम वे वी नीड टू मेक दी लेट्स से पासवर्ड. So for the password, we are using the input type is equals to password. Name is equals to, let's provide it the same. And then we'll make one button. Put type is equals to submit. And value is equals to, let's say okay, or let's say submit, आप जो provide करना चाहो. Right, so basically इसमें बेस्ट प्रैक्टिस इंडस्ट्री में किस तरीके से की जाती है कि we are making the folder structure for each and every concept. So कितने फोल्डर स्ट्रक्चर की अपने को नीड बढ़ सकती है. सो MVC मॉडल व्यू एंड कंट्रोल. सो मॉडल इज नथिंग बट एनकैप्सुलेशन क्लास जो आपकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है. सो लेट्स फर्स्ट मेक दी मॉडल पैकेज एंड आई एम गिविंग दी मॉडल नेम एज अ यूजर. सो हमें दो प्रॉपर्टी को स्टोर करना है. वन इज लेट्स से यूजर नेम, सेकेंड इज द पासवर्ड जो हमने यहाँ डिजाइनिंग में रेडी किया है. सो मेरी मॉडल की फाइल उनको पहले यहाँ पे डिफाइन करेगी विद द यूज ऑफ आईडी, बिकॉज आईडी हम डिजाइनिंग से नहीं डालेंगे, वो हम प्राइमरी की डिफाइन करेंगे इन द डीबी पार्ट. लेकिन मॉडल में तो उनको आपको कॉल करना पड़ेगा बिकॉज आईडी ऑल्सो रिक्वायर्ड दी डेटा हाइडिंग. एंड वेरकेर में अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड जाएगा. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस स्ट्रिंग ओवर हियर. लेट्स से यूजर नेम एंड पासवर्ड. और जिस तरीके से हमने गेटर सेटर बनाया था, same way over here we need to call getter setter of each. चलो ये काम मॉडल का हो गया. देन जो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेगा दैट इज अवर JDBC कोड, जावा टू डेटाबेस कनेक्टिविटी. सो उसके लिए आई एम मेकिंग दी सेपरेट क्लास. सो SRC न्यू क्लास, make the different package of it util, and let's give the class name as a dbutil. सो आपके कनेक्शन का जो JDBC का कोड होगा वो हर एक क्वेरी के लिए नीडेड होगा. तो एवरी टाइम वो कोड अगर आपको रिपीट नहीं करना है तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि उसको आप अलग से एक मेथड में ही डिफाइन कर दो. लेट्स से कनेक्शन की मैं एक मेथड बनाती हूँ एंड द हेडर फाइल नीडेड इज java.sql ओनली. एंड लेट्स मेक एनी नेम ऑफ द मेथड. लेट्स से जी कनेक्शन. एंड कनेक्शन पे हमने मेथड बनाई है, सो इट विल रिटर्न दी connection variable only. So that's why I am making the connection as a global variable and just return it like this. And जो JDBC के required step है that is your two lines. So first is you need to load your jar file, load your driver file, whatever you can say. So that is done by using the class.forename.
सो यहाँ JDBC का एक लिमिटेशन है कि फॉर ईच एंड एवरी डेटाबेस देर इज अ डिफरेंट we can say different jars, right? जो अभी हम यूज कर रहे हैं ड्राइवर्स, we can say exactly name is your driver. तो MySQL का ड्राइवर अलग है, Oracle का ड्राइवर अलग है. अगर आप डिफरेंट डेटाबेस में काम कर रहे हो तो सबका ड्राइवर्स अलग होता है. MSSS required the different drivers. So अभी हम MySQL में काम कर रहे हैं, so we need to load that particular driver only. So that driver is fixed, that syntax is fixed. It's a case sensitive. So that is com.mysql.jdbc.driver. और यहाँ पे आपको एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेगा, जो अभी हमने फीचर में डिस्कस किया कि why Java is a powerful, why Java is a robust, just because he is supporting your try and catch concept. Then we need to connect to our SQL. So for the connectivity, we need to call the driver manager and we need to fetch the connection. So for fetch the connection, we need to use the get connection method. And here we need to load the another driver for MySQL, that is the JDBC MySQL. And our host is a local host and our port number is 3306. ये कैसे हमें पता चला है? Because I'm using the XAMPP server over here. आप PHP MyAdmin का भी यूज कर सकते हो. So XAMPP server में when we are starting our SQL server, then it will run on this port 3306. You can change it on the later, but it will nothing matter. So 3306 जो है वो अपना पोर्ट है जिसके ऊपर आपका local host connect होता है to fetch all your DB related queries. And oblique and your database name you need to provide over here. So for the query editor, I'm using the SQL Yog over here. So SQL Yog के अंदर जैसे आप देख सकते हो host automatically आ चुका है. Username is a root as a by default. Password भी default blank होता है. And your port number is 3306. So you need to just connect on it. And defaultly हर एक database test करके database आपको provide करता ही है. Right? And मेरे यहाँ पे already tables बने हुए हैं. लेकिन मैं यहाँ पे एक दूसरा टेबल बनाती हूँ. लेट्स से हम यहाँ पे अभी एक डेमो वेबसाइट ही बना रहे हैं. सो आई एम गिविंग दी of underscore db and first I'm making the integer so id, primary key and auto increment. So this is just indexing part of our table. Then I'm making the username as a column. Username है so I'm using the varchar over here and varchar में आपको लेंथ देना कंपलसरी है. इंटीजर में नहीं दोगे तो भी चलेगा because it support the 11 as a length by default. Then I'm making the password as a field and same data type it needs. Let's provide the value as a 30 and save it. So after making the table, you can open it and you can show your value over here. So default it's blank. So हम values जो है वो अपनी Java application से उसमें enter करेंगे. So अपने database का नाम test है. So we need to provide database name over here. Then the username जो अपना था DB का अपने local host का, right? That is your root. And password is default blank. So you need to provide it blank like this. Semicolon. और ये जो दूसरी लाइन हमने लिखी उसमें भी एक exception है. So उसको भी हमें handle करना पड़ेगा. But we know the concept of exception handling. The single try can handle the multiple catch. So don't give try catch and throws. Just call the extra catch block. तो आपका प्रोग्राम थोड़ा complicated नहीं दिखेगा. Like this. So हमारा जो connectivity का कोड है वो एक separate हो गया. And now the query structure. Query का पोर्शन आप किस तरीके से करोगे? So जो framework जो है वो query के लिए एक DAO concept का यूज करता है, the data access object. So I'm making the another class with the third package, that is your DAO package, and let's make the class of data DAO. बेसिकली डाउ स्ट्रक्चर जो है वो आपको एग्जैक्टली स्प्रिंग के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन मैं उसका थोड़ा आपको एग्जांपल देती हूँ कि डाउ जो है वो इंटरफेस के अंदर फर्स्ट मेथड बनाता है, देन उसका जो कनेक्टिंग क्लास होता है वहां पे जाके उसको डिक्लेयर करता है. सो एज वी नो इंटरफेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेथड डिफाइन करने का काम करता है. सो उसी तरीके का हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लेते हैं. लेट्स मेक द इंटरफेस.
एंड यहाँ पे हमें पहले एक इंसर्ट की क्वेरी का काम करना है. सो लेट्स फर्स्ट मेक द मेथड which we are going to contain our insert logic. So बेसिकली जो डेटा है वो मॉडल में स्टोर होना चाहिए, देन मॉडल थ्रू डेटाबेस के अंदर स्टोर होना चाहिए. एमवीसी में इस तरीके का काम होता है. सो अपना जो मॉडल का नेम है दैट इज द यूजर एंड प्रोवाइड वन एनी मेथड नेम फॉर द इंसर्ट. और बेस्ट प्रैक्टिस आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि लेट्स मेक द मेथड विद द डेटा टाइप स्ट्रिंग एंड देन इन द ब्रैकेट वी नीड टू प्रोवाइड द मॉडल क्लास. सो यूजर एंड give any reference variable of the method, let's say u. So interface हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया और हमें कोड जावा का कंसेप्ट पता है कि इंटरफेस जब आप बनाते हो तो उसको डिक्लेयर करने के लिए वी नीड टू मेक द क्लास. सो क्लास इंटरफेस को कनेक्ट कैसे करेगा? बाय यूजिंग द implements कीवर्ड. सो implements data i, this is your interface name and connect it. So add an unimplementer method करोगे, so your Eclipse will automatically detect your undefined methods and it will going to contain over here. So basically इसके अंदर हमें प्रिपेयर स्टेटमेंट थ्रू काम कंटिन्यू करना है, लेकिन उससे पहले मुझे कनेक्टिविटी का कोड चाहिए होगा, तो उसको मुझे बार बार लिखना ना पड़े, इसीलिए मैंने उसको एक सेपरेट क्लास में ले लिया. दैट इज अवर dbutil फाइल. सो dbutil के अंदर जो हमने एक मेथड बनाई उसको आप कैसे कॉल करोगे? सो बाय मेकिंग द object of your class. So dbutil db is equals to new dbutil and we require the connection method over here. And how to call the methods? So your object variable dot your method name. So db dot your method name is gconnection and method हमने किस में बनाई थी? तो method हमने बनाई थी connection के अंदर, right? So but obvious we need to store it in the connection data type like this. Oops, we don't need to provide whole the name, just provide the c is equals to, because we have already defined it. So this is done. And then we need to make our query structure. तो queries के लिए जावा जो है वो statement का यूज करता है. So we are using the prepare statement over here. Otherwise you can use the statement itself, prepare statement, and third statement is your callable statement. लेकिन callable statement जो है वो आपकी PL SQL के साथ काम करता है ज्यादातर. So that's why the best यहाँ पे जो रहेगा वो prepare statement रहेगा. Let's make any variable, connect it by using your connection variable and dot prepare statement itself method is there. और यहाँ पे हमें यूज करनी है insert की query. So SQL insert की query को support करता है, that is your insert into your table name. So our table name is demo underscore of db and our starting column is by the username and password. We don't need to start with the ID because ID जो है वो auto increment values लेगा. So provide your starting index over here, password and values जो है वो यहाँ पे question mark से फाइट करता है prepare statement जो है वो. And then उसमें वैल्यू फिर आप किस तरीके से असाइन करोगे, लेकिन फर्स्ट मुझे इसको ट्राई कैच में हैंडल करना पड़ेगा. सो सराउंड इट विद द ट्राई कैच. देन यहाँ पे आपको जो सीक्वेंसेस है वो आपकी क्वेरी स्ट्रक्चर की देखनी है. सो फर्स्ट हमारा जो क्वेरी स्ट्रक्चर है वो पहले यूजर नेम को ऐड करता है, उसके बाद इट विल गोइंग टू ऐड दी पासवर्ड. सो फर्स्ट इंडेक्स जो है वो यूजर नेम पे है. सो यूजर नेम हमारा वेरियर में है. So for that we need to call the set string. Parameter index always start with the 1 and then we need to call its getter method जो हमने MVC में मॉडल जो बनाया है. So उसकी getter method को कॉल करना है. Same way for the password string, password is in the second index and then u dot password. And insert, update, delete
जो है वो DML का पार्ट है, इट्स अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो उसके लिए ये आफ्टर प्रोवाइडिंग द वैल्यू वी नीड टू एक्सिक्यूट इट बाय यूजिंग द एक्सिक्यूट अपडेट। सो एक्सिक्यूट अपडेट की वर्ड इज देयर, एंड एक्सिक्यूट अपडेट जो है वो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। एक्सिक्यूट अपडेट जो है वो आपकी इंटीजर मेथड को सपोर्ट करता है, मतलब उसकी जो रिटर्न टाइप होती है वो इंटीजर होती है। यहाँ पे भी आप कर्सर ले जाओगे देन इट विल प्रोवाइड इट्स कंसेप्ट, राइट। तो ये जो है वो इंटीजर पे स्टोर करता है। सो वी नीड टू स्टोर इट इन वन इंटीजर वेरिएबल, एंड आफ्टर स्टोरिंग इट हमें पता है कि इंटीजर जो है अगर उसने इंसर्ट की क्वेरी को लोड कर दिया है मतलब इट विल गिव अस दी पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे हम अपना खुद का लॉजिक इस तरीके का बना सकते हैं, एंड हमने स्ट्रिंग में मेथड बनाई है, सो वी कैन रिटर्न वन स्ट्रिंग मेथड ओवर हियर। लेट्स से इट्स अ सक्सेस। एंड थर्ड पोर्शन इज आवर कंट्रोलर पार्ट, जो होगा सर्वलेट की पेज से। सो अभी हमें लास्ट एक हमारी सर्वलेट की फाइल बनानी है। सो src new and your सर्वलेट पेज। So this is our controller, and make it DB controller. सो सर्वलेट जो है वो इस तरीके से दो मेथड को कंटेन करता है, वन इज योर डू गेट, सेकेंड इज योर डू पोस्ट। तो जो हमने डिस्कस किया था कि जब हम JSP पेज बना रहे थे देन यहाँ पे जो एक्शन का पोर्शन हमने ब्लैंक रखा था, तो JSP इज रिडायरेक्टिंग टू योर सर्वलेट पेज, एंड सर्वलेट जो है वो रिस्पॉन्स में फिर रिडायरेक्ट करेगा टू वन ऑफ योर JSP पेज। सो यहाँ पे हमें रिडायरेक्ट करना है टू अवर सर्वलेट। सर्वलेट पेज पे रिडायरेक्ट करने के लिए वी नीड टू प्रोवाइड ओनली इट्स नेम। सो सर्वलेट पेज जो है वो उसके एक्सटेंशन से कॉल नहीं होगा, इट्स कॉल बाय यूजिंग ओनली इट्स नेम। और जो यहाँ पे web.xml की फाइल है जो हमने स्टार्टिंग के टाइम डिस्कस किया था, इट्स डेवलपमेंट डिस्क्रिप्टर। सो बेसिकली जब आप सर्वलेट की फाइल बनाओगे तो ये जो आपको टैग देखने को मिल रहा है दैट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय योर प्रोजेक्ट। व्हाई? बिकॉज वी हैव यूज्ड द 2.5 एज अ मॉड्यूल वर्जन, दैट्स व्हाई। अगर आप 2.5 से अबव का वर्जन लेते हो देन यू नीड टू प्रोवाइड दिस कोड बाय योरसेल्फ, राइट। सो सर्वलेट नेम, सर्वलेट लोकेशन, URL पैटर्न, ये कोड बेसिकली चाहिए बिकॉज सर्वलेट की फाइल जो है वो डेवलपमेंट डिस्क्रिप्टर से रन होती है, दैट्स व्हाई। एंड मेथड वी आर यूजिंग द पोस्ट ओवर हियर। सो गो इनटू द सो मेथड हमने पोस्ट यूज किया है, दैट्स व्हाई वी नीड टू मेक आवर कोड इनसाइड द टू पोस्ट मेथड। अगर हमने गेट यूज किया होगा देन विल नीड टू यूज दी गेट। दोनों आप साथ में भी यूज कर सकते हो लेकिन उसका कोड स्ट्रक्चर फिर उस तरीके से हमें मैनेज करना पड़ता है। सो फर्स्ट वी नीड टू फैच अवर वैल्यू फ्रॉम द टेक्स्ट बॉक्स। सो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमारी दो पैरामीटर है, फर्स्ट इज यूजर नेम, सेकेंड इज योर पासवर्ड। सो दोनों हमारी varchar में स्टोर है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द स्ट्रिंग ओवर हियर। लेट्स गिव द सेम नेम। कैसे फैच करोगे? सो हमें HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट की एक रिजर्व कीवर्ड यूज करनी है, दैट इज योर रिक्वेस्ट कीवर्ड। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर इज योर ओनली कीवर्ड टू फैच द वैल्यू फ्रॉम योर client. Client it means your JSP page. So यहाँ पे कौन से नेम पैरामीटर आएंगे? दैट इज योर दिस नेम वेरिएबल। सो यहाँ पे आपने जो नेम पैरामीटर लिया है वो आपको यहाँ पे ऐसे इस तरीके से पास करना है। सेम वी नीड टू यूज फॉर द पासवर्ड लाइक दिस। Then basically
टेक्स्टबॉक्स में से रिट्राइव करके वी नीड टू स्टोर इनटू द मॉडल वेरिएबल एंड देन वी नीड टू मॉडल से हमें स्टोर करना है उसको डेटाबेस के अंदर. सो मॉडल जो अपना है दैट इज योर यूजर क्लास. सो मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर क्लास ओवर हियर. एंड कैसे स्टोर होगा? सो अभी हमने उसका एक एग्जांपल देखा था कि बाय यूजिंग योर सेटर प्रॉपर्टी. सो सेट यूजर नेम और कंटेंट कौन कर रहा है? योर दिस ब्राउन कलर वेरिएबल नेम दैट इज यूजर नेम. वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो फेच कर देगा इक्लिप्स. देन सेम वे द पासवर्ड. पासवर्ड विल बी देयर. एंड देन आफ्टर जो हमने क्वेरी स्ट्रक्चर बनाया था दैट इज इनसाइड द डाओ क्लास. सो हमें ये इंसर्ट के मेथड को कॉल करना है बाय मेकिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ योर डेटा डाओ. So third step is to call your DAO class. So data DAO of DAO is equals to new data DAO and then DAO dot insert. And in bracket हमने पैरामीटर में मॉडल के क्लास को पास किया था, तो आर्ग्यूमेंट में भी हमें मॉडल क्लास के वेरिएबल को फेच करना है जो इक्लिप्स अगेन बाय डिफॉल्ट ले लेगा. स्टोर इट इन दी स्ट्रिंग वेरिएबल बिकॉज हमने मेथड जो बनाई थी वो स्ट्रिंग में बनाई थी. That's why. एंड बेसिकली हमने स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग मेथड के अंदर एक मैसेज रिटर्न करवाया था इंसर्ट मेथड के अंदर. ये मेथड चेक करेगा योर कंट्रोलर. सो हाउ स्ट्रिंग इज कंपेयरिंग इट्स वैल्यू. सो एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कंपेयर करने के लिए वी आर यूजिंग दी इक्वल्स कीवर्ड. सो एस डॉट इक्वल्स, ये आपका कोर जावा का कंसेप्ट है. And then provide the exact value. And अगर उसको सक्सेस मिलता है उसका मतलब क्या है कि your query is successfully executed. So that portion is checked by your control. This is the architecture of your MVC framework. और redirect कैसे करेगा? So redirect करने के लिए we are using the request dispatcher. The request dispatcher provide one variable name and then ये रिजर्व सिंटेक्स है उसकी कि रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर एंड देन ये हमारा सर्वर है. डीबी कंट्रोलर इज अवर सर्वर और यू कैन से इट्स अ सर्वलेट. तो सर्वलेट रिस्पॉन्ड करेगा टू योर क्लाइंट पेज. तो जहां से हमने डेटा की रिक्वेस्ट की थी दैट इज अवर जेएसपी पेज. तो सर्वलेट क्या करेगा? उसी जेएसपी पेज में रिस्पॉन्ड करेगा. सो प्रोवाइड दैट JSP page with its extension and then rd dot forward method will be used. So forward, request and response, two parameters we require in the particular forward method. So this is done. रन किसको करना है? टू योर क्लाइंट पेज. यहां से आपकी शुरुआत होगी. सो रन योर दिस क्लास, राइट क्लिक, रन ऑन दी सर्वर. यू नीड टू बेसिकली deploy your Tomcat server over here. So after deploying your Tomcat server, just finish your installation, restart the server. Okay, so as a home page you will get your designing. Let's say I'm providing the username over here. Let's say Parul webinar and password is your 1234. Okay. Okay, one thing we forget over here कि हमें यहाँ पे com.mysql की 4 फाइल ऐड करनी है. सो ये जो LIB है वहां पे जाके you need to provide your jar file. So com.mysql की jar बेसिकली हमें इसके अंदर डालनी होगी. So I'm just taking it from one of my project. This is the jar that is required to any of the operation. This is our first requirement for the jar. So let's run it again.
So basically, there is a two jar file that will be in the need. First is your Servlet API, second is your com.mysql. Let's run it again. Okay, so I'm running it again. Finish. Okay, why is not supporting? Let's make it homepage.jsp. Okay, so I'm making the username over here. Let's say test. Password is 1234. Okay. रिस्पॉन्ड करने के बाद वो गया सर्वलेट में एंड सर्वलेट ने रिस्पॉन्स दिया अगेन टू योर जेएसपी. इसका मतलब कि यहाँ पे अपना क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर सक्सेसफुली हो चुका है एंड व्हेन यू गोइंग टू रिफ्रेश योर डीबी देन यू विल गेट योर अपडेटेड रो. सो इस तरीके से बेसिकली पूरा एमवीसी फ्रेमवर्क काम करता है. सो दिस इज जस्ट द डेमोस्ट्रेशन ऑफ इट. ये बहुत मतलब ब्रॉड कंसेप्ट है. इसमें एक डेटाबेस से रिट्राइव करने के लिए वी आर यूजिंग द कलेक्शन फ्रेमवर्क इनसाइड द एमवीसी फ्रेमवर्क. देन फैच कैसे होता है, अपडेट कैसे होता है, आप डिलीट कैसे कर सकते हो. दैट इज द बेसिक डेवलपिंग स्किल्स दैट यू विल बी इन द नीड ऑफ जब भी आप एज अ डेवलपर काम करने जाओगे. राइट, तो दिस इज द एमवीसी फ्रेमवर्क. लेट्स आई एम शोइंग यू द डेमोस्ट्रेशन ऑफ द Hibernate framework. So basically अभी जो required है, जो अभी हमने यहाँ पे वेब कंटेंट के अंदर ये जो जार फाइल में काम किया है, राइट, उसकी जगह इंडस्ट्री में अभी हम लोग काम कर रहे हैं विद दी मैवन फ्रेमवर्क. सो मैवन क्या करता है कि यहाँ पे आप जैसे मैन्युअली जार डाउनलोड करके ऐड करते हो, उसकी जगह पे उसके डिपेंडेंसी को ऐड करता है. सो बेसिकली जब भी आप स्टार्ट करो एंड स्टार्ट विद द यूज ऑफ मैवन. सो मैवन का इस तरीके से प्रोजेक्ट बनता है. सो बेसिकली इसमें आपको रिमोट कैटेगरीज, रिमोट आर्ट्स टाइप को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जिससे आपको सारी आर्ट्स टाइप इंटरनेट से डाउनलोड हो जाती है. सो यू डोंट नीड टू इंस्टॉल दी स्पेसिफिक जार फॉर दैट. सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंसी डालनी होती है. सो डिपेंडेंसी डालने के बाद जितनी भी जार की रिक्वायरमेंट होती है वो आपका जो आईडी होगा वो ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग ऑफ आर्ट्स टाइप ऑटोमेटिकली उसको फैच कर देगा. सो मैवन जो है वो डिपेंडेंसीज के ऊपर काम करता है, जिसमें यू नीड टू मेक द प्रोजेक्ट लाइक दिस कि ग्रुप आईडी मतलब कि योर फोल्डर स्ट्रक्चर नेम एंड आर्टिफैक्ट आईडी दैट मींस योर प्रोजेक्ट नेम. एक द हाइबरनेट प्रोजेक्ट एंड फिनिश इट. ओके, सो दिस इज द वे टू क्रिएट द हाइबरनेट प्रोजेक्ट, जिसमें इस तरीके का फोल्डर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा. इसमें resources will be there, the src main java will be there. So जो कनेक्टिविटी अभी हमने क्वेरीज थ्रू की, वो कनेक्टिविटी बेसिकली हाइबरनेट जो है, फर्स्ट थिंग ये होगा कि आपको हाइबरनेट पहले पीसी में इंस्टॉल करना पड़ेगा. देन आफ्टर जब आप इंस्टॉल करोगे देन यू विल गेट दी हाइबरनेट फोल्डर लाइक दिस. तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन की फाइल आती है. सो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन की फाइल जो है वो इस तरीके से आपके डायलेक्ट को यहाँ पे आपको चूज करने देगी. दिस इज वन ऑफ द डायलेक्ट. इतने डेटाबेस को हाइबरनेट बेसिकली सपोर्ट करता है, जिसमें से अभी हम यूज कर रहे हैं MySQL. अच्छे, एंड जो कोड आप कर रहे थे class.4 नेम से, वो कोड करने की हाइबरनेट में जरूरत नहीं रहेगी, बिकॉज हाइबरनेट इज सपोर्टिंग योर ORM फ्रेमवर्क, दैट इज योर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग. जिससे क्या होता है कि आपकी मॉडल की फाइल जो अभी हम बना रहे थे, तो वो मॉडल की फाइल को रीड करके आपको
आपका टेबल वो ऑटोमेटिकली बना देगा टेबल, एंड योर क्लास नेम विल ऑटोमेटिकली विल बी क्रिएटेड, राइट। तो जिसमें आपको इस तरीके से जार फाइल वो डिटेक्ट कर लेगा, वी नीड टू जस्ट सिलेक्ट इट एंड कनेक्शन यूआरएल विल बी देयर। सो यहाँ पे इस तरीके से आपको कनेक्शन की यूआरएल लेनी होगी एंड सिर्फ और सिर्फ आपको होस्ट नेम प्रोवाइड करना है। यहाँ पे इतना काम आपका फ्रेमवर्क, हाइबरनेट फ्रेमवर्क इजी कर देगा। सो हाइबरनेट जो है वो उसके खुद की क्वेरीज पर डिपेंड करता है, दैट इज योर HQL हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेजेस। सो यू डोंट नीड टू राइट द SQL एंड Oracle's क्वेरी, राइट। तो आपको वहां पे उन डेटाबेस की क्वेरी स्ट्रक्चर यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज HQL जो है वो उसके खुद की टेक्नोलॉजी का डेटाबेस है, खुद की क्वेरी लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा, जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होता है, जो ऑब्जेक्ट से पूरी क्वेरी स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। एंड द यूजर नेम इज योर रूट एंड फिनिश इट। सोर्स के अंदर इस तरीके से आपके कोडिंग ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, राइट। तो इतनी प्रॉपर्टीज का जो कोड था, तो कनेक्टिविटी इस तरीके से हाइबरनेट के अंदर वो डिफाइन करता है। देन बाकी का फोल्डर स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा। लाइक से मुझे अगर मॉडल की फाइल बनानी है, राइट, क्वेरी स्ट्रक्चर बनानी है, तो उसमें आप सेव कमांड से पूरी क्वेरी स्ट्रक्चर बनेगी। कनेक्टिविटी का कोड भी डिफरेंट रहेगा कंपेयर टू दी व्हाट वी कैन से J2EE आर्किटेक्चर। जो हाइबरनेट जो है वो टोटली ORM फ्रेमवर्क पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग के ऊपर, जिसकी कोडिंग स्ट्रक्चर कंपेयर टू द MVC थोड़ी डिफरेंट होती है, राइट। लेकिन जो इंडस्ट्री में अभी यूज हो रहा है, दैट इज योर वन ऑफ दिस टू फ्रेमवर्क, द स्प्रिंग एंड हाइबरनेट। लेकिन जो शुरुआती दौर में चाहिए, दैट इज योर MVC फ्रेमवर्क। सो इफ यू आर अवेयर ऑफ MVC, यू कैन स्टार्ट विद द हाइबरनेट एंड देन यू कैन शिफ्ट टू द स्प्रिंग फ्रेमवर्क। इस तरीके से पूरा सीक्वेंस के अंदर वो जाता है। सो उसका मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देती हूँ हाइबरनेट का, कि कैसे क्वेरी स्ट्रक्चर वो प्रोवाइड करता है। सो इनसाइड द डेटा DAO, सी, राइट। तो ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी DCL का काम है, दिस डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जो आपकी क्वेरीज के डेटा को कमिट करता है, राइट। सो आफ्टर स्टार्टिंग द ट्रांजैक्शन, यहाँ पे हमें सारी क्वेरी ट्रांजैक्शन के अंदर रखनी होती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डेटा परसिस्टेंस, राइट। एंड सेव कमांड जो है वो बेसिकली आपकी पूरे डेटा को डेटाबेस में स्टोर करके देगा। सो जो इंसर्ट की क्वेरी का काम आप करते थे, दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस सेव कमांड। तो यहाँ पे काम आपका बहुत कम हो जाता है, बहुत फास्टेस्ट हो जाता है, एंड दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ बाय यूजिंग द फ्रेमवर्क्स। तो सेव इज वन ऑफ योर ऑब्जेक्ट हु कैन इंसर्ट योर डेटा। और जो कनेक्टिविटी का कोड होता है इसमें, तो हाइबरनेट जो है वो पर्टिकुलर सेशन फैक्ट्री के ऊपर काम करता है। सो बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन से जो आपने कनेक्टिविटी का कोड लिया होगा XML के अंदर, जो अभी हमने थोड़ा बहुत देखा था, राइट, उसको कॉल करने के लिए दे आर यूजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट। और सेशन फैक्ट्री जो है वो आपकी ब्रिज बनाने का काम करती है बिटवीन द कॉन्फ़िगरेशन एंड योर सेशन। सो आफ्टर स्टार्टिंग द सेशन, वो बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट थ्रू डेटाबेस में सब कुछ स्टोर कर देगी। सो यहाँ पे जो आप मॉडल की फाइल यूज करोगे, लाइक से दिस इज योर मॉडल फाइल, राइट। सो ये जो क्लास है, राइट, ये क्लास से बेसिकली वो क्या करेगा, टेबल आपकी ऑटोमेटिकली बना देगा। और ये जो आपने प्रॉपर्टीज यहाँ पे ले रखी है, उससे क्या करेगा, वो कॉलम्स ऑटोमेटिकली बना देगा। सो जहाँ पे मतलब एडवांटेज क्या अपन लोग कह सकते हैं कि जो टेबल अभी मैंने मैन्युअली बनाया था, राइट, वो सब आपको नहीं करना पड़ेगा। यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड योर डेटाबेस नेम ओनली। आप डेटाबेस नेम उनको प्रोवाइड कर दोगे तो वो डेटाबेस में जाके योर टेबल विथ इट्स कॉलम ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, राइट। तो दिस इज द पावरफुलनेस ऑफ योर फ्रेमवर्क। एनोटेशन के ऊपर वो बेसिकली काम करता है, राइट। प्राइमरी की एंड ऑटो इंक्रीमेंट का कंसेप्ट जो है वो ये जनरेटेड वैल्यू से बेसिकली वो डिटेक्ट करेगा, राइट। फिर उसमें आप प्राइमरी की, फॉरेन की तक का कंसेप्ट यूज कर सकते हो, जिसमें पेरेंट टेबल होता है, चाइल्ड टेबल होता है। तो वो 1 to 1 है, 1 to many है, many to 1 है, many to 1 है। ये 4 मैपिंग को वो सपोर्ट करता है, राइट। सो लेट्स प्रोवाइड दी 1 to 1 सेशन में आपको उसका एक एग्जांपल बताती हूँ। 1 to 1 सेशन में बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपको फॉरेन की का कंसेप्ट अगर हाइबरनेट से बनाना है, सो उसके लिए आपको 2 मॉडल की फाइल बनानी होगी, बिकॉज आप जितने भी टेबल बनाना चाहते हो ना, उस तरीके का आपको मॉडल फाइल्स बनाने पड़ता है। सो एक मॉडल क्लास जो है वो दूसरे मॉडल क्लास के ऊपर डिपेंडेड होता है उसमें। सो आफ्टर मेकिंग 1 मॉडल क्लास, जब आप उसकी गेटर सेटर बनाओगे,
लाइक दिस। जैसे कि ये सेकेंड मॉडल जो है वो मेरे फर्स्ट मॉडल के ऊपर मैंने यहाँ पे उसका वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और उसकी जब गेटर सेटर प्रॉपर्टी बनती है तो वहां पे आपको 1-to-1 एनोटेशन का यूज करना पड़ता है, और दूसरे टेबल की प्राइमरी की के साथ फॉरेन की बेसिकली कनेक्ट होती है। सो वी नीड टू प्रोवाइड दैट टेबल्स प्राइमरी की ओवर हियर। इससे बेसिकली क्या होगा कि दो टेबल ऑटोमेटिकली बनेगा लाइक दिस, राइट। ये एक टेबल बनेगा और उसकी फॉरेन की बनेगी दूसरे टेबल में, जहां पे आपको इस तरीके के सिंबल के साथ देखने को मिलेगा। ओके, सो आई होप ये सेशन आपको नॉलेजेबल रहा होगा। किसी को कोई भी क्वेरी है तो आपके कोऑर्डिनेटर थ्रू आप मुझसे कंसर्न कर सकते हो, राइट। प्रोजेक्ट बनाना है जावा में, फ्रेमवर्क डिटेल में सीखना है, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ एक डेमोस्ट्रेशन था, राइट। तो इसको अगर और डिटेल में आपको ले जाना है, इसके आपको अगर डेवलपिंग में जाना है बाय यूजिंग द जावा टेक्नोलॉजीज, राइट, तो आप अपने फैकल्टी थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। So I'm ending the session over here. Ma'am, am I audible? Shefali, ma'am, am I audible? Am I audible, Shefali, ma'am? Shefali, ma'am, am I audible? Shefali, ma'am, am I audible to you? Okay, thank you so much everyone for attending the today's webinar. Okay, I think ma'am is facing some kind of technical issues. Okay, so we'll just wind up this particular webinar. So thank you so much, and thank you so much, Shefali ma'am, for providing the very valuable knowledge. And behalf from the Palo University, I'm thanking you a lot to have you over here. Thank you so much, ma'am.